Good morning, all of you. My name is Keena. I'm BSc Chemistry Honors, the third year students. Now we have discussed about the NMR spectroscopy. NMR means is the nuclear magnetic field resonance spectroscopy. Nuclear is the nucleus which have spin active nucleus. Means no spin, means it has no zero spin is called the spin active nucleus. Spin active nucleus are the number of protons and number of neutrons both are even, so they have no spin, and the number of protons plus number of neutrons both are odd, so the spin is the integer, and the number of protons and the is the integer value, and the number of protons and number of neutrons both are odd is called the integral spin. It's called the integral spin. And the nuclear and magnetic field, we have no applied the magnetic field, so the direction the nuclei are non-directional. Now we have applied the magnetic field. They split into the energy levels. In NMR spectroscopy, we have discussed about the proton, it means hydrogen topics. Its spin is half. So they split into two levels. One is the lowest level is the minus half spin, and the highest level is the plus half spin. It's depend on magnitude of magnetic fields. Its formula del E is equal to 2 mu naught H. Now we have discussed about the resonance. Resonance is the nuclei is the ground state nuclei is transferred into excited state nuclei. Heat in the RF radiations is called RF radiations is called resonance. And relaxation is its behaves is opposite. It is the excited state nuclei go in word of ground state ground state is called relaxation. Relaxation is the two types. One is the spin lattice energy. Its relaxation is called when the excited state nuclei is income to the environment is called spin lattice relaxation. And spin trans relaxation is the excited state nuclei is come in the ground state nuclei, and energy is transferred the ground state nuclei. Spin active nuclei is called spin relaxations. The chemical shift is the presence of chemical shift is the presence of incoming radiations, and the TMS means tetramethyl silicates transfer difference is called chemical shift. Magnetic field is the unit is Tesla and tau. Tesla is 1 to 10 Tesla, and tau is opposite, means 10 to 0. Tetramethyl silicates is the highest intensity, and it is more shielded, higher magnetic field. Their Tesla value is 0. Thank you so much. Next. Myself Ankita from BSc Chemistry Honors final year. Today my presentation topic is cellulose. Firstly हमें पता होना चाहिए कि cellulose क्या होता है. Cellulose molecular formula of cellulose is C6H10O5N. Its structural repeating unit is beta glucose. Cellulose can be converted into fibers due to their linear structure. It is used for making clothes, paper, etc. Cellulose act as a main structure material of cell walls of all plants. फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सेलुलोज why cellulose is not digestible in human body, because in our human body there is no enzyme present which can hydrolyze cellulose into glucose.
so cellulose is not digestible in human body. फिर एक क्वेश्चन और राइज होता है कि सेलुलोज अगर हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता तो देन व्हाई इट इज यूज्ड इन आवर डाइट. सेलुलोज डिसॉल्व सेलुलोज. अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज देखना है तो सेलुलोज में डिफरेंट बीटा ग्लूकोज आपस में ज्वाइन होंगे. इसमें बीटा है तो OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे, OH H, और थर्ड पे OH ऊपर होता है और H नीचे, OH H H और CH2 OH. अब ऐसे ही दूसरी यूनिट आएगी OH H OH H H OH OH H H CH2 OH, और यहाँ से इसका OH और इसका H ये दोनों निकल के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे H OH H OH OH H, और यहाँ से एक बीटा ग्लाइसो ईथर बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में. यहाँ पे H है और ये H OH OH H H OH और यहाँ पे H CH2 OH. ये इसको बोलते हैं ईथर बॉन्ड. थैंक यू. Good morning. My name is Jyoti from BSc Final Year Chemistry Honors. Today, my topic of presentation is carbohydrate. As we know, carbohydrates are the very important macromolecules in macromolecules. As we know, plants perform photosynthesis, use CO2 and H2 and make glucose. And this glucose is taken by animals and convert back into CO2 and H2O, which give energy as which is required for sustain of life. Here we discuss about carbohydrate. Carbohydrates made by two words, carbon plus hydrates means hydrate of carbons. A general formula for carbohydrate is C6H2OY. The compounds which follow the formula are known as carbohydrate, but there are some other compounds which do not fit in formula, but although they are carbohydrates. For example, ramnose. Ramnose का formula है C6H11O5. It is not fit in formula, but it is carbohydrate. But there are some other compounds which are fit in formula, but they are not carbohydrate, like acetic acid. Acetic acid CH3COOH. When we put in this formula, it totally fit, but it is not carbohydrate. Now we discuss about classification of carbohydrate. First classification, sugar and non-sugar. Sugar are those compounds which are crystalline in nature and soluble in water. For example, glucose, fructose, which are sweet in taste. But non-glucose, which are amorphous in nature and not soluble in water. Example, starch. The second classification is monosaccharide, oligosaccharide, and polysaccharide. Monosaccharides are the simplest compound which cannot be further hydrolyzed, like glucose, fructose. And second is oligosaccharide, which can be hydrolyzed and give monosaccharide units with 2 carbon to 10 carbon units. Example is sucrose, maltose, lactose, and polysaccharide, which can be hydrolyzed and give a large number of subunits. Example, starch, cellulose. Now we discuss about structure of glucose. Glucose is a 6-carbon compound
and it is a polyhydroxyaldehyde compound C6H12O6. This is the structure of glucose. 6 carbons are arranged in a chain. First of all, aldehyde group and below CS2OH group attached. Here OH. In glucose, third carbon position OH is different. It is the structure of glucose, and all the monosaccharides are dextrorotatory, so we also known as dextrorotatory glucose. Now we study preparation of glucose. We can prepare glucose from sucrose. When sucrose is hydrolyzed in alcoholic medium with dilute HCl, it breaks into glucose and fructose. Here we can prepare glucose. Now we discuss its physical properties. Then glucose is crystalline in nature, colorless compound. It is soluble in water, less soluble in alcohol. Now we discuss its chemical properties. First of all, when we react glucose with cyanohydrine, it give a cyanohydrine compound CS2OH, CHOH4, CHOHCN. That compound is formed. Secondly, when we react it with phenylhydrazine, it gives us glucose phenylhydrazone compound. Now we react glucose with phenylhydrazine. It gives us oxime compound. And all these three reactions which we written are give the molecular formula of glucose. That all define that in the aldehyde group is present in glucose, because all these compound react with only aldehyde group, so it confirms that the aldehyde group is present in glucose. Secondly, when we react this compound with HI, it gives a simple chain of 6 carbon atom. This reaction confirms that in glucose a straight chain of 6 carbon atom is present. Now we react this compound with acetic anhydride. This compound react with 5 OH group present in glucose and give pentaacetate compound.
This reaction shows that in glucose 5 hydroxy compounds are present. Second compound is fructose. In fructose is polyhydroxy ketone compound. Its structure is air. At second position ketonic group is present, and it is also a crystalline compound which is soluble in water and less soluble in alcohol. All reactions are same like that of glucose. Thank you. Good morning. Myself Yoginder. Today my BSc Chemistry Honors final year. Today my topic for presentation is organometallic compounds. Firstly, the definition of organometallic compounds. Organometallic compounds are those in which there is a metal-carbon bond, with some exceptions are called organometallic compounds. ऐसे compounds जिनमें metal और carbon के बीच में bond होता है उन्हें organometallic compounds कहते हैं. जैसे for example alkyl lithium, dialkyl zinc, dialkyl cadmium, Grignard reagent. But there are some compounds in which metal carbon bonds, but they are not organometallic compounds. For example, cyanides and carbides. इनमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है लेकिन ये organometallic compounds नहीं है because their property do not match with the organometallic compounds, so they are not organometallic compounds. Now, the types of organometallic compounds. There are two types: simple organometallic compounds or mixed or complex organometallic compounds. Simple organometallic compounds. The compounds in which metal is linked with R group are called simple organometallic compounds. For example, alkyl lithium or Li, Grignard reagent, dialkyl cadmium, R2CD, and complex organometallic compounds. The compounds in which metal is linked with R group along with X group. These are complex organometallic compounds. For example, Grignard reagent or MgX, in which metal is linked with a R group or halogen group. In a simple organometallic compounds, there is a covalent bond because metal linked with only alkyl group. In a mixed or a complex organometallic compounds, there is a ionic bond because metal is linked with a R group along with X group. Due to halogen group, there is a ionic character. Now, why they are reactive? Reactivity of organometallic compounds depend upon ionic character of a metal carbon bond. Ionic character depend upon electropositive nature of a metal. Electropositive nature of metal is more is the polarity of a bond. Electropositive nature of metal means more tendency to lose electrons of a metal. So, if a metal loses more electrons, then there is a more polar bond and then more electropositive nature of metal. And so more is the polarity, more is the ionic character, and more is the reactivity of organic compounds. So this is the reason why organometallic compounds are reactive. Thank you. Good morning, everyone. I am Dimple from BSc Chemistry Honors 3rd year. 56 is my class roll number. Today in this presentation, my topic is organosulfur compound. First of all, हम study करेंगे कि organosulfur compound क्या होते हैं. A compound in which there is bond between sulfur and carbon atom is called organosulfur compound. For example, thiols, thioethers, sulfonic acid, thioacids, thiamides, detergents, etc. First of all, हम thiols की study करेंगे. Thiols.
The alkyl derivative of H2S are called thiols. जैसे कि first of all, thiols, the derivative of alcohol in which oxygen atom replace sulfur atom are called thiols. Alcohol, ROH. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। इसमें क्या कहा कि हमने ऑक्सीजन एटम को रिप्लेस कर दिया है सल्फर एटम से, तो ऑक्सीजन एटम निकाल दिया और सल्फर को हमने ऐड कर दिया है। RSH, this is thiols. Another definition, the alkyl derivative of H2S are called thiols. S के पास लोन पेयर होते हैं, H एटम को रिप्लेस करना है R एटम से। Also called thiols. Thiols का कॉमन नेम है मरकैप्टन। थायोल्स का कॉमन नेम है मरकैप्टन। मरकैप्टन एक जर्मन वर्ड है। मरकैप्टन कॉइन्ड हुआ है लेटिन से। मर मीन्स मरकरी एंड कैप्टन मीन्स कैप्चरिंग। इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराया है 1832 में। 1832 में एक साइंटिस्ट ने विलियम क्रिस्टोफर जेस, बिकॉज द थाइलेटो ग्रुप बॉन्ड आर वेरी स्ट्रांगली विद मरकरी कंपाउंड। सो आगे हम स्टडी करेंगे थायोल्स की प्रिपरेशन। थायोल्स की प्रिपरेशन हम काफी कंपाउंड से कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल से, एल्केन से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, थायोएस्टर से, एक्सेट्रा। दिस इज थायोल्स। अब थायोल्स की हम प्रिपरेशन करेंगे एल्केन से। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन्स, एल्केन्स के सबसे पहले हम हैलोजिनेशन करेंगे होमोलाइटिक फिजन से। ये इसका हमने होमोलाइटिक क्लीवेज कर दिया है। तो ये हमारा RX एल्काइल हैलाइड बन गया है। अब इसको आगे कराएंगे एक्वस KSH से। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में अल्कोहल को प्रिपेयर करते थे तो वहां हम एक्वस KOH लेते थे, बट लेकिन यहाँ थायोल्स प्रिपेयर करे तो वही O को रिप्लेस करना है S से, तो हमने यहाँ पे लिया एक्वस KSH, तो हमारे यहाँ से थायोल्स प्रिपेयर हो गए। नेक्स्ट हम थायोल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgX। अब वही हमने थायोल्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, सल्फर, तो हम सल्फर के साथ कराएंगे, तो हमारा सल्फर। इसके बाद कुछ नहीं करना, हमें हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे, नेगेटिव, स्लाइड नेगेटिव चार्ज, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव के पास आएगा H पॉजिटिव, स्लाइड पॉजिटिव के पास आएगा OH नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा RSH थायोल्स प्रिपेयर हो गए और हमारा साइड प्रोडक्ट MgX OH निकल गया। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे थायोएस्टर से। इसमें हमने कुछ नहीं करना, इसमें हम डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे थायोल्स प्रिपेयर हो जाएंगे। स्लाइड नेगेटिव एंड स्लाइड नेगेटिव चार्ज एंड स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव के पास H पॉजिटिव एंड स्लाइड पॉजिटिव के पास OH नेगेटिव। तो हमारे यहाँ से RSH थायोल्स प्रिपेयर हो गए और हमारा साइड प्रोडक्ट निकल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं।
अल्कोहल से हम डायरेक्टली थायोल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक रिएजेंट है Na2S, या फिर हम इसकी जगह P2S5 भी यूज कर सकते हैं, तो हमारा थायोल्स प्रिपेयर हो जाएगा। थायोल्स में जो प्रोपेन थायोल है वो अक्कर होता है हमारा अनियन में, एंड अलाइल मरकैप्टम है वो अक्कर होता है गार्लिक में। थैंक यू। I am Bhupender from BSc Chemistry Honors third year. Today I am going to present a topic called mass spectroscopy. In mass spectroscopy, we study the graph of M by Z versus intensity, where M is mass and Z is charge. It's a destructive technique. Compound is destroyed in this technique. In this, we take sample in vapor phase. For vapor phase, the pressure is very low, almost 10 raised to power minus 2 torr, and we fall a electron beam of energy 70 electron volt. By the beam, the molecule of sample destroyed and formed a molecular ion. Molecular ion is formed by the loss of electron by the energy of 10 electron volt, and the remaining energy is used for the formation of fragment ion. And after passing through the magnetic field, the fragment ion and molecule ion deflected in the magnetic field and are determined by analyzer. Here, and different peaks are observed on the basis of formed fragment ion and molecular ions. The peak with the highest intensity is assumed of 100 intensity, and the remaining peaks are calculated on the basis of this peak and called relative intensity peaks. The peak with the highest intensity is called base peak. It can either peak of molecular ion or maybe fragment ion. And the small peaks are of isotopes and impurities. Intensity of any peak depends on stability of ion formed. And the deflection of this ion
is inversely proportional to the m by z value. And we can also say that higher the weight, less is the deflection. By the electron beam first, the potential for the loss of electron potential used for ejection of electron is according sigma electrons are most strongly, so higher the potential is required for them. After that, pi electrons. Before pi electrons, acyclic conjugated electrons. After that, cyclic conjugated. And then pi electrons. Pi electrons are most loosely bounded and the potential required for them is lower. Thank you. I am Yogesh from basic chemistry final year. So my topic for presentation is carbohydrates. So mainly मुझे जानना होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, तो ये एक तरह के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इनका एक अलग रोल होता है, ये इम्पोर्टेंट टर्म होती है इनकी. सो कार्बोहाइड्रेट्स इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे फ्रुक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च एक्सेट्रा. से इनका मेनली ये दो तरह से बनते हैं. कार्बन और वाटर को जब ऐड करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. इनका फॉर्मूला हो गया CnH2O. इसमें शुरू में ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड होते हैं ऑन से, और जब इनमें एल्डिहाइड ग्रुप को ऐड करते हैं तो ये एल्डोल क्या कहलाते हैं. थैंक यू. Good morning. I Ravi of class BSc Chemistry on third year. So today's my topic is introduction of organometallic compounds. So organometallic compounds are compounds which involves the linkage of metal and carbon bond. So definition of this is organometallic compounds are the MC bond with some extensions are called organometallic compounds. So for example, Grignard reagent RMGX R2 dialkyl cadmium, dialkyl lithium, and tetraethyl lead. So in cyanides or carbides, they also have a metal carbon bond, but their properties are not as same as that of organometallic compounds, so they are not involved in the organometallic compounds. So types of organometallic compounds: first,
simple organometallic compounds. This involves the the organometallic compounds which involves the that is the alkyl group linkage of R metal, and for example Grignard reagent RMGX, and the second type is mixed or complex organometallic compound. So this involves the X atom and the R atom linkage both. For example, Grignard reagent. So the reactivity of organometallic compounds, these depend upon the metallic or electropositive nature of the metal atom, and also on the polarity of the organometallic compound. If the electropositive nature of the metal atom is more, the ionic character is also more, and therefore the reactivity of the organometallic compound is also more. As we see of some metal atom electropositive nature in the series of decreasing order, that is potassium, sodium, lithium, magnesium, aluminium. So their reactivity order is also in the decreasing order, that is K carbon Kc bond, same in the decreasing order. So their polarity also is in the decreasing order. Thank you. Good morning, everyone. I am Suman from BSc Chemistry Honors third year, and my topic of presentation is NMR spectroscopy. So, first of all, what is spectroscopy? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक होती है जिसका यूज हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटरेक्शन करवाई जाती है मैटर के साथ. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, एंड कुछ पार्ट. So what is NMR stands here? N means nucleus, M means magnetic field, R means resonance. So स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम एनएमआर स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं. एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस यहाँ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस होना चाहिए. कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस नहीं होता, तो वही कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा हम स्टडी कर सकते हैं जिनका न्यूक्लियस स्पिन एक्टिव होता है. एंड सेकंड रिक्वायरमेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो वो सैंपल ट्यूब जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, वो सैंपल ट्यूब टू मैग्नेट्स के बीच में प्लेस्ड की जाती है, और ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन किया जा सके. थैंक यू. Good morning, everyone. My name is Ritu. I am student of BSc Chemistry Honors final year. My today's topic is principle of NMR spectroscopy. So first of all, NMR spectroscopy stands for nuclear magnetic resonance spectroscopy, in which जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस होगा. और स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उसमें जो स्पिन होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि वो पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन में हो सकता है, पर वो जीरो नहीं हो सकता. तो वो हमारा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस होगा. इसके बाद स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस के अगर हम कुछ रूल्स देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, अगर वो मिलके ऑड होते हैं तो जो हमारा स्पिन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. अगर जो दोनों न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो उनका जो प्लस होता है, अगर वो ऑड होता है तो जो हमारा इंटीजर आएगा स्पिन का वो हाफ आएगा. इसके बाद अगर हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसके ऊपर हम एक सैंपल ट्यूब को प्लेस करेंगे. सैंपल ट्यूब के अंदर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होगा, और उसको सोल्यूशन ऐड करके उसको हम लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे, और उसके जो अराउंड में हमारा जो मैग्नेटिक होगा वो हमारा इंड्यूस्ड सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होगा जो अप्लाइड होगा अपने आप, मतलब ऑलरेडी अप्लाइड होगा. उसके बाद अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो जो हमारी रेजोनेंस होगी उसकी हेल्प से क्या होगा, जो हमारी एनर्जी है वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगी. तो ये थे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. अगर हम इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट विद द हेल्प ऑफ कोरस्पॉन्डिंग गैप बिटवीन द जो हमारा मीडियम होगा, इन बिटवीन द मीडियम एंड द सराउंडिंग प्रेजेंट अराउंड है.
उसके बाद अगर हम इसके प्रिंसिपल के बाद अगर हम इसके जो डायग्राम को अगर हम देखें तो इसमें जब हमारा जो फर्स्ट यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा जब वो प्रेजेंट होगा यानी कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना करें तो जो हमारे न्यूक्लियस की जो वो होगी ओरिएंटेशन होगी वो तो अलग अलग डायरेक्शन में होगी पर जो एनर्जी होगी वो सिमिलर अमाउंट में प्रेजेंट होगी। इसके बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अगर हम अपने डायग्राम को देखेंगे तो वो जो एक जो लाइन में एनर्जी गैप जा रहा था वो डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक लोअर एनर्जी स्टेट और एक हायर एनर्जी स्टेट। जो लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट के बीच में जो गैप होगा डेल्टा ई, उसको हम रिप्रेजेंट उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 म्यू नॉट एच आई, 2 म्यू नॉट एच। और एच की वैल्यू जैसे हमने पहले बात की थी कि वो डिपेंड करता है कि वो हाफ होगी, 0 होगी, 1 होगी, तो यहाँ पे अगर हम उसको हाफ लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू नॉट एच। उसके बाद इस एनर्जी गैप को हम मेंटेन करने के लिए हम बाहर से रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस को अगर इसके ऊपर अलाउ करेंगे मतलब इसके ऊपर पास आउट करेंगे तो एनर्जी गैप जो है वो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से ये प्रोसेस सिमल्टेनियसली चली जाएगी क्योंकि उस जो एनर्जी गैप लोअर है वो अपर हो जाएगा, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद जो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं तो फिर वो हायर वाले लोअर में आ जाएंगे और इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी। थैंक यू।